y'all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? जो टारगेट वैल्यू है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये हम करेंगे, अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको। देखिए रन हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप है सिंपल, बड़ा सिंपल सा मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। तो मॉडल डिजाइन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मॉडल में हमें कुछ नहीं, एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का लेयर डाला है एज इमेजेस। तो कम 2D रहेगा उसका, और उसका एक्टिवेशन फंक्शन हमने रेलू लिया है, और इमेज जो भी हमारे इनिशियल इमेज है तो वो रहेगा। उसके बाद में हमने मैक्स पूलिंग लेयर यूज़ किया है, उसके बाद में फिर से कन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूलिंग लेयर यूज़ किया है। उसके बाद में लास्ट में हमने फ्लैटन किया है। एंड यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में डेंस लेयर है जिसमें रेलू रहेगा, और लास्ट में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन रहेगा। तो सब शुरू में जो यूज़ करते हैं मोस्टली डिजिटल CNN में तो रेलू फंक्शन ही रहता है, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन रहता है वो सॉफ्ट मैक्स ही रहता है। और उसके बाद में हमें मॉडल समरी देखने को मिल सकता है। तो हम रन करते हैं इसको, और इमीडिएटली आफ्टर दैट वी कैन सी द मॉडल समरी। देखिए यहाँ पे आ गई है मॉडल समरी। तो आउटपुट शेप आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में पैरामीटर्स कितने यूटिलाइज हुए वो दिख जाएगा, कितने पैरामीटर प्रोसेस हुए, ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर इसमें 0 है, मतलब ऑल पैरामीटर्स आर ट्रेनेबल। उसके बाद में हम कंपाइल करेंगे इसको। ऑप्टिमाइजर ऑफकोर्स एडम लिया है। उसके बाद में लॉस फंक्शन हमने लिया है, और मैट्रिक्स जो रहेगा अपना टेस्टिंग का तो वो एक्यूरेसी मैट्रिक्स रहेगा। हम इसको रन करते हैं, और अभी लास्ट स्टेज है ऑफ टेस्टिंग, सॉरी ट्रेनिंग। तो अभी इधर जो है वो हिस्ट्री नाम का जो है उसमें हम लोग मॉडल को फिट करेंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। इपोक हम ले लेंगे 5, और हमारा वैलिडेशन स्प्लिट रहेगा 10%, और बैचेस हमने 64 लिए। तो चलो इसको हमें ट्रेनिंग देखने को मिलेगा अभी। यहाँ पे देखिए अब ट्रेनिंग हो रहा है, पहला इपोक। Accuracy is coming around 74%, 75% in first epoch itself. हम यहाँ पे एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करेंगे, इट शुड बी अबोव 90-91% एक्यूरेसी। दैट विल बी आई थिंक गुड इनफ फॉर अस। चलिए 90 तक तो अभी जा रहा है फर्स्ट इपोक इटसेल्फ। In first epoch itself, it has reached above 94% of accuracy, and in second epoch it is going about 98% of accuracy. Then
Yes, at the end of 2 epoch it is reached above 98% of accuracy. At the end of 3 epochs we can see the accuracy is again going close to 99%. So at the end of 4th epoch we are reached accuracy, we reached above 99%. See the beauty of deep learning, deep neural network. So such a simple model we have prepared, only 2-3 layers, and handwritten images of digits. It is identifying so properly. This is the last epoch, 5 out of 5. It is taking about 3 minutes for each epoch to train the model. And gradually you can see these accuracies go on increasing. Yes. At the end of 5th epoch, it has reached to the accuracy of 99.30%. It means it is almost very much closer to the 100% accuracy. Then after that we will evaluate this model. So what are the losses and what is the test accuracy we have to find out by using this evaluate service in the model. And for that we are using the test data. The test data is the data which we haven't shown to our training. So in training we have used only training data. For testing we are using data which we have kept aside, and that data we are using here for the testing purpose. So we will see how much model is good in prediction for the unknown data. So it is again very good. It is 99.02% accuracy. So almost again close to it. So it is working very properly for training, invalidation data, as well as unknown data which is we have kept aside. So 99% is very too good accuracy actually. So we will see now predictions. For example, or we have given the image. Images are having the indices. Means whatever is the data set available with us, 0 to number of images that data set is there. So we will give the indices one by one, and we will check. Means in testing there are number of images, right? So all those images we are giving the particular various images, and we will test whether that is identified
correctly or not. Like you can see here, it is a 0, but and predicted is also 0. We will give another image, for example image number 6 we will give. So that may be some other data set available. So this is a 4 and it is again predicted 4. One more image we can give, for example 25th indice we will give in the testing. These are the testing images, grayscale testing images, data set which is unknown image for our, we have kept testing data which is not given for the training. So image number 30 we will test, and so it is identifying very properly that what is the target value. See, this is handwritten 3 and predicted value is also 3. So this is how our model is trained very perfectly for both training, testing and validation data, and this is how we can develop our CNN artificial intelligence using the CNN model, which is a part of deep learning. Thank you for attending. If any query you can write me. Thank you.